Our guest of honor, Shri O.P. Vidyarthi, retired IFS. Now, I would like to call on stage Professor Yash to honor our distinguished guest. Sir. I may now request to Professor. Thank you, sir. Dr. R.P. Manhas, Associate Professor, Department of Botany, Government Degree College, Basoli. Dr. M. Ashad Malik, Assistant Professor, Department of Botany, Government Degree College, PG College, Rajouri. Dr. Singh Rajeshwar, Head Division of Microbiology, Quest, Jammu. It is my immense pleasure to welcome scholars joining this conference through offline and online mode from different parts of the world. As scholars from across the globe have come together and discuss on the theme is the study of the biological knowledge of particular ethnic groups, cultural knowledge about plants, animals and their interrelationships. The lives of native and other peoples who depend heavily on their physical environments are intimately linked to the conservation of biodiversity. Indeed, their survival depends on the long-term availability of local biodiversity to meet their needs for food, shelter, fuel, timber, as well as for spiritual purposes. Many indigenous and local communities today are also economically dependent on biodiversity and are involved in the harvest and sale of a diversity of plant and animal species through local, national and international markets. Given that most of the world's remaining biodiversity remains in areas inhabited by people interact with their environment and its consequences for biodiversity is critical. With about 100 research papers scheduled to be present, I am sure that this conference shall witness significant interventions in the field of ethnobiology.
as we embark in this journey, on this journey of academic discussions across 2 days. I wish everyone the very best. Thank you all and have a nice day. Thank you, ma'am, for your welcome address. Now I request the organizing secretary of this conference, Professor Yash sir, to present his introductory note about the conference. With the GDC chairman, sir, retired Captain Mahan Singh ji, BDC chairman, retired Colonel Mahan Singh ji, BDC chairman, sir, Ashok Kumar ji, guest of honor, Shri Om Prakash Vidyarthi ji, retired IFS and former PCCF and present member of Biodiversity Council of JNK. Then respected Vajeshwar Singh ji, head microbiology division of SCOS Jammu, worthy principal ma'am, and worthy principal ma'am Government Degree College Billawar, and worthy principal ma'am Government Degree College Mahanpur. I am very pleased with the assignments when we take these assignments from our worthy principal. I am very excited plus thrilled. But due to the cooperation of our worthy principal ma'am and advisors, we have completed this task to some extent till date. And the introduction about the conference, still we have more than 100 participants all over the world. Near about 20 participants are from abroad, out of India, and near about 100 participants from India, Jammu Kashmir and other parts of India. Most of the participants, they are joining us on live session or online session. More than 50 participants are now on the online link, Google link with us. They are joined with us. The 2-day international conference on Ethnobiology present the future perspective brings people. What's the reason or why we have choose a theme? We have choose a theme because this theme is forgotten by most of the people. Not the most, but most of the society, because our traditions that brings our traditions are forgotten and depleted at a very fast rate, because in few decades before, most Thank you all. To the respected chief guest, retired Colonel Mahan Singh ji, BDC chairman, BDC chairman Ashok Kumar ji and Tripathi ji, Narayan Tripathi, Vijay Singh ji, who is from SCOST, Principal Madam, GDC BILLAWAR, Principal GDC Mahanpur, and enthusiastic young students, faculty members. We are gathered here to have this conference on a very relevant topic, that is ethnobiology. Before we could see the Western kind of thinking regarding the scientific ways to understand nature and natural phenomena, we had our legacy in India when we had the rishis like Nag, Kan, Adi Kan, that he propounded the theory of Parmanu.
that is the smallest particle which cannot be further divided. Before the Bohr gave us the atomic theory, but only because we lost connection with our Sanskrit Vedic period. So we have to acknowledge that Bohr gave us this atomic theory. We forgot the contribution of Kanar, Rishi Kanar. Likewise, we had the Bose, who gave the idea about the God particle, which was after the Western scientists also made some head forward in that particular field. There was a famous CERN experiment in Switzerland, and they named that particle, which is popularly named as God particle, as Higgs boson. Means acknowledging the contribution even of Bose, who gave this theory much earlier, before Higgs could propound this theory, but because could not document, and then that was the colonial era. We were the slaves to the British people. And when we talk about here, about our traditional ethnic knowledge, ethno means what? Ethnic people, ethnic way of thinking. In the Himalayas, if I talk about Kashmir, we had the 14th century saint Sheikhul Alam, or popularly also known as Nanda Rishi, who gave us a famous quote, "Unpostelian Banposhi." As long as there will be forest, you will have the food security. So food security will not come through our legislation, although that's important. But equally important is conservation of forests, natural resources, if we really want our food security. Because where the genes will come? Genes will come from forest, natural wilderness. We have the gram Kala Chana, but it's wild crop or lately existing in the high mountains of the Likewise, if I talk about South India, then we have the famous poet, Tamil poet, Tiruvalluvar, who was having the same foodstuff as our Sheikhul Alam in Kashmir. And he also gave us this thought of non-violence, vegetarianism. Why vegetarianism or non-violence? Because this nurtures compassion, love, not only for humans, but for the all diversity of life. शर्मा जी, उनके साथ दूसरे हमारे जो भी मेहमान जहाँ पर बैठे हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, और हमारे प्रिंसिपल जो महानपुर से हैं, और हमारे सभी जो प्रोफेसर और बाकी जो स्कूल के विद्यार्थी जहाँ पर बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आज माननीय चेयरमैन साहब जम्मू से आ रहे थे, तो एक साथ हम दोनों आए, तो इन्होंने कहा डिग्री कॉलेज बिलावर में एक कार्यक्रम है, तो उसमें जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे अच्छा लगा। और ये जरूरी भी है कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो अपने, चाहे वो हमारा डिग्री कॉलेज है, हाई सेकेंडरी है, स्कूल में आना जाना लगा रहे, और उसमें स्कूल में जाकर ही, जैसे हम डिग्री कॉलेज में आए तो जहां आकर लगा ये कार्यक्रम जो आप लोगों ने रखा है, जैसे मैं पीछे देख रहा हूं, जो बांस के जो वहां पर जैसे हमारे अभी पोल होते हैं, ये बड़ी एक अच्छा मुझे लगा जो आपने जहां पर बना के रखे हैं। जो अनाज हमारे खेतों में पैदा होता है, जब हम टीन के कोल में उस अनाज को रखते हैं तो वो नमी उसकी अपनी तो होती ही होती है, लेकिन जब वो गर्म होता है वो अनाज खराब हो जाता है और उससे कई बीमारियां जो है वो लगती हैं। और ये जो हमारा देसी कोल है जो बांस का हम बनाते हैं, ये बातें बड़ी ध्यान में रखने वाली है, ये हम लोगों ने करना चाहिए। और आज हमारे डिग्री कॉलेज में जब मैं देख रहा था पीछे से, ये नमी ले लेता है अनाज, गर्म भी अगर इसमें कोल में आप डाल लेते हो तो ये नमी अपने आप ले लेता, हवा में छोड़ देता, और कभी आपका अनाज खराब नहीं होता और खाने के लिए भी स्वादिष्ट रहता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, जैसे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास है कि हमारा इतिहास क्या था,
ये हम सभी विद्यार्थी इस बात को याद रखें, ध्यान में रखें, हमने अपने इतिहास को दोहराना है जिसको कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है। और इन बातों को, जो हमारे त्योहार हैं उनको कैसे मनाना है, हमारे गांव की परंपरा क्या है, हमने अपने गांव को कैसे बचाना है, ये सारी बातें हमने ध्यान में रखनी है। और इनकी चर्चा हर कार्यालय में और हर स्कूल में, हर डिग्री कॉलेज में होनी चाहिए। बड़ों का मान सम्मान करें, उनका आदर करें। और ये वही हमारा विद्यालय है और विद्यालय को हम अपना मंदिर समझ के यहाँ पर प्रवेश करें। और इसी से हम सब कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। एक बार फिर, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज अनीता जमवाल जी, जिन्होंने अति सुंदर व्याख्यान यहाँ पर किया है। और माननीय हमारे कर्नल महान सिंह जी, जो हर कार्यक्रम में जहाँ भी कोई बुलाए वहाँ पर जाते हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। And heritage shapes our future, and how this transmission of traditional knowledge help the younger generations who are going to be the future of our new India, how it is beneficial for them. Thank you, sir. I now request Shri Ashok Kumar ji, Block Development Chairman, on the stage, on the dais, to share his thoughts. Thank you, sir. डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, इनके साथ बैठे हुए डीडीसी काउंसलर नरगोटा के नारायण दत्त त्रिपाठी जी, डिग्री कॉलेज बिलावर की प्रिंसिपल अनीता जमाल जी, डिग्री कॉलेज मानपुर की प्रिंसिपल, यहाँ आए हुए अलग अलग कॉलेज से प्रोफेसर, अलग अलग हमारे बीच रिटायर्ड भी एक ऑफिसर आए हुए हैं, न सबका नाम नहीं जानता। बाकी डिग्री कॉलेज बिलावर के प्रोफेसर, बच्चे बच्चियां, मैं आज सबका बिलावर ब्लॉक में, डिग्री कॉलेज बिलावर में सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। जैसे कि आज इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इन्होंने ये सुंदर तरीके से इसको पेश किया है। हमें जो हमारा इतिहास है, चाहे हम कितनी भी तरक्की अपनी स्टेट की कर लें, अपने देश की कर लें, लेकिन जो हमारा पुराना प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसको हमें नहीं भूलना है। मैं आपको थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारा एक ट्रेनिंग का टूर हमारा हैदराबाद में गया था, तो वो स्टेटें जो है वो काफी डेवलप हैं। हमें जहां हैदराबाद में जब हमें ट्रेनिंग सेंटर में लिया गया, तो वहां जाके हमें उन्होंने जो उन स्टेटों का इतिहास है, चाहे उन स्टेटों ने जितनी मर्जी तरक्की कर ली है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने जो इतिहास हैं उनको नहीं भूला है। हमें जो विजिट करवाया पंचायतों में लेके, उन्होंने जो अपना उनका ट्रेडिशनल जो उनकी अपनी इतिहास है, जो उनकी चीजें हैं, जो उनकी वस्तु हैं पुरानी, जो उनके एनिमल्स हैं, उनके डेयरीज हैं, उनके प्लांट्स हैं, उनके बारे में हमें रूबरू करवाया। जो उन्होंने नई तरक्की की है उसके बारे में हमें रूबरू करवाया। तो मैं अपनी स्टेट की बात करता हूं, जम्मू कश्मीर की। हमारी स्टेट का जम्मू कश्मीर स्टेट का किसी भी स्टेट से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हमें जो कुदरत ने जो हमें नवाजा है, हमें कोई भी चीज की कमी नहीं रखी है हमारी स्टेट में। चाहे वो केरला स्टेट ले लो आप, केरला सबसे बढ़िया डेवलप स्टेट है, लेकिन जो उन्होंने उसको डेवलप किया है, उन्होंने खुद उसको डेवलप किया है। हमारी जो स्टेट है इसमें हर चीज है, जो हमें तीनों मौसम जो है हमारी स्टेट को तीनों मिलते हैं। यहां
सर्दी का मौसम भी है, हमारे जम्मू में गर्मी का भी है, बरसात का भी है। लेकिन वहां जो केरला में सबसे जो डेवलप स्टेट है, वहां बराबर मौसम रहता है। तरक्की चाहे वो जितनी भी उन्होंने स्टेटों ने कर ली है, क्लाइमेट के लिहाज से हमारी स्टेट का कोई भी मुकाबला नहीं है। हमें वो विजिट पे गांव पे ले गए, गांव पे खेतों में ले गए, तो वो वहां का जो क्लाइमेट था वो भी पोल्यूटर था। हम जहां मर्जी बैठ जाए, हमारे कोई भी इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। हमें इसको बचा के रखना है। हमें यही बताया गया, जो हमें प्रोफेसर जो हमें पढ़ा रहे थे, उन्होंने ये बताया हमें कि आपकी स्टेट को जो कुदरत ने दिया है वो कम नहीं है, सिर्फ आपको बचा के रखना है, अपने क्लाइमेट को साफ सुथरा रखना है, अपने एनवायरमेंट को अपने साफ सुथरा रखना है, अपने जो प्लांट्स हैं, आपके जो पुराने प्लांट्स हैं, आपके जो एंगल हैं, उनको आपने बचा के रखना है, उनको जिंदा रखना है। जो पुरानी आपका जो इतिहास है उसको आपने जिंदा रखना है। ये हमें वहां बताया गया है। इसलिए हम सब लोगों की ये ड्यूटी बनती है, जो क्लाइमेट जो खराब करने में हम सब लोगों का रोल है, इसको रोकना है। हमारे इस क्लाइमेट में, इस हवा में कोई भी इतना पोल्यूशन नहीं है। वहां आप जाके चाहे खेत में चले जाओ, चाहे टूरिस्ट स्पॉट में चले जाओ, वहां आपको हवा में बदबू मिलेगी। चाहे जंगल में चले जाओ, वहां भी आपको मिलेगी। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। चाहे हम शहर में बैठेंगे, हमारा जो क्लाइमेट है इतना पोल्यूटेड नहीं है। इसको हमें बचा के रखना है। दूसरी चीज, आज जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर यहाँ पे बैठे हैं, हम एक ही चीज से हम खराब हो रहे हैं, जो हमारा ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन जो है हमारे जो क्लाइमेट को भी गंदा कर रहा है, हमारे इलाके को भी गंदा कर रहा है, हमारे पानी को भी गंदा कर रहा है। हमारे जो पुराने तालाब हैं ऐतिहासिक, उनको भी हम लोग अब खुद गंदा कर रहे हैं। हमें सबको इसको बचाना है, क्योंकि अगर इन चीजों को हम नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में जो बाकी स्टेटों की हालत हो रही है वो भी हमारी होगी, वैसी हमारी होगी, फिर हम उसको बचा नहीं पाएंगे। अभी हमारा स्टार्ट है, तो हमें इसको सब लोगों को हमें प्रण लेना है कि इस चीज से हमें बचना है। ये कोई लाइटली बात नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है कि जो पॉलीथीन है वाकई ये घाती क्या हमारे लोगों के लिए। अभी हमारे यहाँ काम है, हमारे जंगल बचे हैं, हर चीज बची है। हमें ये गंदगी यहाँ फैलने नहीं देना है, ये हमारे सब लोगों की ड्यूटी बनती है। तो आज ये बच्चे जो काम आए हैं, मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम जी को कहना चाहता हूं कि जब भी ये बड़े ऐसे प्रोग्राम हो तो बच्चों को, खासकर बच्चों को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि आज ये बड़े अच्छे लोग प्रोफेसर जो बाहर के यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इतनी अच्छे यहाँ पे बातें की हैं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमने सुनी है, बाकी बच्चे भी यहाँ पे आए वो भी सुने। बच्चे जो हैं वो ही हमारा आगे फ्यूचर है, हमारे देश की शान है। आगे हमारा देश जो बढ़ेगा इन बच्चों से बढ़ेगा। सभी कहते हैं कि हमारा युवा देश है, लेकिन युवा देश को जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे तब तक ये युवा जो है आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो आप, जब तक आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पर नहीं उतरोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते मेरे भाइयों। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो लोग मेहनत करते हैं वो अपने टारगेट पर खुद बराबर पहुंचते हैं। मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है कि आपको अपनी टारगेट पे पहुंचा सकता है, आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। कोई भी आपको आगे, कोई भी आपको ऐसे कोई भी ऐसा आसान तरीका नहीं है जिससे आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। मैं सब लोगों को, जितने भी जहां बच्चे बच्चियां आए हैं, आपको अपने टाइम की कदर करनी है। टाइम को अपना बिल्कुल उसको गंवाना नहीं है। टाइम जो है ये कभी हाथ नहीं आता। और मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंटें हैं पूरा प्रयास कर रही हैं, जो हमारी नए यूथ है, नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया, हर चीज पे फोकस दे रही हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हमारा 3 टायर सिस्टम आज पहली बार बना है। तो पंचायतें जो है वो पूरा भरपूर तरीके से काम कर रही हैं, हर सेक्टर में कर रही हैं। ये पूरा श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से अपनी पंचायतों को जो भी चीजें मुहैया करानी है वो करवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे सरपंचों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पंचों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे बीडीसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे डीडीसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग दे के हमारे लोगों को वो अवेयर करना चाहते हैं। मैं सभी लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बाकी भी यहाँ बोलने वाले हैं।
तो मैं एक ही बात पे लास्ट पे खत्म करूंगा, जो हमारा पुराना ये रीति रिवाज है, जैसे ये हमने उन्होंने प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है, इसको हम लाइटली नहीं ले, क्योंकि हमें पुराना जो हमारा इतिहास है उसको हमें भूलना नहीं है, उसको जिंदा रखना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एनिमल में हो, प्लांट्स में हो, किसी भी चीज में हो, चाहे हमारा देश जितना भी तरक्की कर लेगा। Teach our younger generations to learn new things for this new India. Thank you, sir. With great honor, I would like to call on dais our chief guest, retired Colonel Shri Mahan Singh Ji, Chairman, District Development Council, Katwa, for his kind remarks. Thank you, sir. Professor ANITA JAMWAL ji, Principal GDC BILLAWAR, my colleague of DDC Council Shri Narayan Dutt Tripathi ji, Shri Ashok Sharma ji, BDC Chairperson BILLAWAR, Shri Om Prakash Vidyarthi ji, retired IFS and former Principal Chief Conservator JNK State, Professor Sangeeta Sudan ji, Principal Government Degree College Mahanpur, Dr. Bajeshwar ji, Sukash Jammu, faculty members, our respected guests here, budding scholars, ladies and gentlemen. It is a matter of immense pleasure for me to be amongst you all here in GDC BILLAWAR to attend this inaugural session of this 2 days long conference on ethnobiology, present and future perspectives. Last year also I was part of a similar event here. It is a matter of great pride for all of us and particularly to GDC BILLAWAR to conduct such events regularly to inform, educate, counsel, guide and train the participants on subject of vital interest. Such events also provide perfect platform to meet face to face with people working in particular field, exchange details and ideas about as to how you might work together in the future. Ethnobiology, as we term it, ethno means traditional knowledge and custom of peoples, and biology means the study of plant and living beings, our animal biodiversity, etc. Therefore, ethnobiology simply means the study of plants and animals and their practical uses through traditional knowledge of a local culture and people, or we can say it is the study of relationship between plant, animal and humans. ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ